close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go. Hello everyone. Hello. Yes, yes. Yeah.
वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? राइट 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 राइट, कितने सारे लोग गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े तो हुए हैं, आई गेस. दिस द ओनली थिंग इज आई एम गेटिंग एन echo. Okay, I need to solve that technical issue. ऑलराइट, अभी भी एको आ रहा है क्या मुझे? परफेक्ट 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 परफेक्ट. चलिए चलिए चलिए. सो राइट. जैसे आपने देखा, थोड़ी टेक्निकल इशू. हाँ जी, इसको भी फिक्स करने के लिए मुझे लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी वर्कशॉप्स अटेंड करने की जरूरत थी. दिस वाज स्मॉल एग्जांपल की लर्निंग कैसे हर समय चलती रहती है. सो वेलकम बैक एवरीवन टू द नेक्स्ट सेशन वेयर वी ऑल आर गोना सेल थ्रू द एंड्रॉइड जर्नी ऑफ कंपोज स्कैम. It's day one with Lokesh Wazirani, the OSC contributor and an Android lead for GDAC GHRC. With a lots of proud, with what do you call chapper in casino, being with extreme happiness. I would like to give off hi to my very nice friend of mine and the Android lead for Google Developer Student Clubs GHRC, Mr. Lokesh Wazirani. Give a huge round of applause. Welcome, Lokesh. Hello. Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Thank you, Aman, for inviting me to host this workshop. And I'm glad to introduce Android and its new technology to our further students who are willing to attend and our participants who will write up this Android journey to the solution challenge further by contributing in some US US weather fundamentals and solving real world problems by choosing technology stack of Android. I'm glad to teach them and I can only contribute them. By the way, So Lokesh, let's even start. I'm excited to have a good interaction with you, Lokesh. Lokesh, how you came into the Android journey? What is your story behind this? My story behind Android was simple. Like in times of COVID, I used to sit alone and Yeah. do something on my phone and my mobile device. Then I thought that, like, I was going to YouTube and I explored something about Android operating system, and we can go custom rooms like that. And then slowly I started installing of custom homes. Then from a tester to I became a developer for custom homes, contributed in many projects, Android open source projects. Then started developing apps for some customization in Android, and this is how my Android journey began, and it's still going on. Okay, 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 okay. So that is the story behind you, right? For starting Yeah. up with Android. Yes. Yes. Okay, okay, okay. So what do you think, Lokesh? How this Android shall help students with the Google Solution Challenge? For selecting different technology stacks, students should know what technology stack is perfect for Mm-hmm. them. So I guess whatever they are designing the solution, whatever there is a desired solution, we have many technologies in Google, such as Mm-hmm. Flutter, and then there is Android. So people focusing on some real world solutions, they may need Android, and with Jetpack Compose, it's a plus point that they can make Wear OS and Android tab and Android mobile application from single code base. So if they are planning to boost up their project, so that it can fit in Wear OS, where Samsung and all devices use that Wear OS, so they can use a Jetpack Compose with them. Yeah. Like it is easy to learn and all.
So that shall help them to create the applications you mean, which will be used in the Google Solution Challenge, right? Yeah, they can create application for mobile as well as for smartwatches, like with the operating system in it, Google Wear OS. Oh, smartwatches. Okay, okay. Yeah, So yeah. they shall be able to create software for them as mean, right? Yes, yes. For single code base, they can create many softwares from it. Yeah. All right, all right, all right. So, Lokesh, I'm very excited to move further. And without wasting much time, I would like you to take over the stage. Welcome to the journey of Android, my friends, my dear friends. Let's start with day one for the Compose Camp with Lokesh Vazirani. Lokesh, over to you. Yeah. Welcome everyone. This is Compose Camp Day 1 and we are so excited to have you here starting your journey to becoming an Android developer. I'm Lokesh Vaziani, your host come those AOSP contributor and Android lead at GDSC GHRC. Welcoming you to learn in the world of Android awesomeness. Moving further, you might all be thinking what is Compose Camp? So let me introduce what is Compose Camp. In Compose Camp, you will learn how to build Android apps using Jetpack Compose, Android Modern UI Toolkit. It's an Android Modern UI Toolkit. Compose Camp is for everyone who is from absolute beginners to experienced developers. It's for open to everyone. Whenever you feel like learning, you can head over to Google Android page and you can find many courses there. Google introduced it to everyone. And throughout the Compose Camp, you will learn Android development tools, which are latest in the trend. You will be also be participating in solution challenge where you will meet some new developers and people like who are curious to contribute in Android and become like Android is now overtaking iOS in many terms. In upgrades like Android 13 and Android 14, Android is just scaling up and up more features and features they are giving. So Android is the new future. So you can learn from this Android Compose Camp and contribute to the social well-being through the solution challenge. So basically, we hosted this Compose Camp for you all to see what Android is, and whoever it is from beginner. If you don't even know how to code, we are there to help you. How all these things work, and basically, if I personally suggest, starting with Android will be difficult for you, but if you understand Android well, nothing can beat you in the engineering journey, or if you are any other background also like BC or something, any other technical background, if you start from learning Android, I can bet no language will be difficult for you further. So moving further, there are some prerequisites for this camp, like the basic computer literacy, some math skills because some functions require some skills. Okay, computer and headphone, of course. Like why I included this, I don't know, but yeah, if you are wondering why headphones, headphones are because sometimes while you are coding, you need some music, so like it's just introduction introduction camp. So after this camp, I will redirect you to a link. I will provide it into a GDSC GHRC group where you all are participated, and if possible, I will drop it in live chat for the audience who are not from that group or who may not have joined yet. So these are the good. Internet connection is required because Android Studio requires some type of downloading of graded build tools. So you need an internet connection. I know this is a generation where people have the internet connection to Geo. It's unlimited 5G. Yeah, I don't talk much about it. And Android device and USB cable. It's optional, but I suggest to use a USB cable for emulator because using emulator on PC
With the Android Studio is a heavy burden on your processor as well as GPU. And if you have a thin and light laptop, I may say that it's very harmful for your laptop and a very workload for your fan because it needs constant cooling. So better use a cable and I will just show you how to set up your Android Studio. So let's begin with our journey. These objectives will be covered throughout your workshop. This is a 3-day workshop. So let's talk about what you will learn as a part of this series of Compose Camp events. First and foremost, the goal is for you to build your first Android app with Jetpack Compose. To do this, you will learn the Kotlin programming language and install Android Studio on your computer, which is an application to build Android apps. It's an basically it's IDE to build Android apps. And at the end, we will talk about the resources on how you can continue learning about building apps. And further, let's start. This is a Android. You will be working through Android Basics with Compose course. This is an online training course developed by Google for people who want to learn how to build basic Android apps. So Google has provided ample of resources to ace a solution challenge for students who really need to learn some technologies to boost up their resumes and also to ace up their project and solution challenge. Google has provided some resources to everyone. So in the end, as we are guided, I will redirect you to the course, but it's not like that. I will also teach some things. So it's a boost up to that. So in Android Basics, you today we are heading towards Unit 1, your first Android app. Okay. And this course is made up of units. The units are composed of pathways. Here today we will focus on first unit, which is shown here. It's made up of 3 pathways in this season. You will work on pathway 1. Okay. A pathway, you may be wondering what is a pathway. A pathway is an order sequence of activities to learn a specific skill. An activity can be a video. It is also a hands-on coding tutorial, which I will show you further. Code lab, it also consists of code labs. Like if you all have participated in cloud, like our first event hosted by GDSC DSSG, you may know about code labs, I guess. I can see are people there watching me? Like, hey chat, give some response. Like, I should know who am I teaching to. Hello. Okay, let me know. Am I audible? Okay, there's an hi. Hello, Shikesh. Hello, Aman. Yeah, Code Labs was a part of Cloud Study Jams. So in Android also we have Code Labs. Like it teaches you hands-on practice, and you need not to worry how it will go through. Like Code Lab is mostly hosted on Google Cloud, so not much consumption of your resources on PC. Pit, hello. Okay, okay. I know now people are listening to me. Let's move on. So there are 7 activities in this first pathway. All these activities are meant to help you reach specific learning objectives. By the end of this pathway, if you are already familiar with the skill that the pathway teaches, you can skip that pathway and move on. Know why you are going wrong. Like if you are going for an interview, you should know that this question went wrong and this was the reason. I should give the right answer here so I can ace my this interview.
Okay, we have a comment buffering. Is it team? Can you just cross check and tell? Hello. Mm, is it buffering? Okay, it is. I can see it to my phone too. Okay, so let's move on. Let's move on further with the source and material. Like before answering again, you should know what went wrong when. So okay, these are some W's. What went wrong when, four W's in my world. So I basically whenever I go wrong, I just check where I did go wrong, like why, and that's how it makes me better. So I want you all to learn that. Okay, let's move further. You will earn badges to your you will earn badges to your journey. Like whenever you pass a quiz, you will earn a badge like this. These badges will help you to showcase your profile more effectively further in your resume, or like if you go to Android community on Google, you will see that many developers are having good portfolio or something with that page badges. It aces them, like okay, and this is your Google developer profile looks like, and there will be badges and also completion, like you have completed this course, and which will also help the recruiters too, that they understand that you have completed this. And like in this times of recession, it's a need to showcase your skills to the recruiters. They need a proof that you know this language or you know this technology. So this Google developer profile will help you to tell your recruiters confidently that yes, I have done this, and these are my earned badges which I earned from passing this tough quizzes on solution challenge. So without, I guess you all are clear. So let's move. This is session overview. So now that you are familiar that what we are learning today on this platform and how this course looks like, let's dive into some important concepts that you will be learning about. So starting with, what is Kotlin programming language? Kotlin, Kotlin, all are the same. Like I don't hesitate in calling something different. But Kotlin is basically a language which is used by Jetpack Compose and also by Google to develop the Android programs. Like before, it was XML Android. It was Android manifest.xml file where we would code in large number of lines. Like I recently developed a quizzes application where from first to seventh standard children can answer some quizzes on GK something. It took me around 861 lines. Mm. And it was in XML. Now migrating to Kotlin and Jetpack Compose, the same app would take me around 200 lines of code. Nothing much. Like you can see the difference. XML was 4 times more lines of code, and this Kotlin programming language and Jetpack Compose is better now. That you will create some apps in
a fast time. Like 200 lines of code is nothing as you compared in industry. Okay, so let's after Google introduced this Kotlin programming language and Jetpack Compose, many features of Kotlin has quickly gained momentum in the industry, and it's used by over 50% of professional Android developers now. Pathway 1 of the unit is focused on helping you understand the basics of Kotlin. So where you have to practice Kotlin is Kotlin Playground. Like you can open your browser and just write Kotlin Playground, and you will be directed to it. If I can show you this time. Yeah. Are you able to see this tab? If I'm not wrong. Mm, yeah, this is Kotlin Playground tab, and here you can write the lines of code whichever and with the help of Control plus F9, you will able to run your code. This is better if you have to learn Kotlin faster. Like installing and setting up in your PC would be difficult. So mm, it's better to focus on the playground. Okay. So without wasting further time, I need to share this tab too. Wait a minute. Mm, Stop presenting. Again, I will present. Okay. Yeah, and my screen is visible again, I guess. Yeah. Okay, so moving further without wasting some time. What is a program? How do you define a program? If somebody can answer in comments, it will be grateful for me to see how much attentive you are and you are not wasting time. And also a suggestion, should I switch to Hindi? Like if you are not comfortable with English or something like that, if you want me to talk in English, something like that. Mm, comments. Hello, chat. Tell me. English. Yes, sir. So moving गुड सो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी में हिंदी हमारी मातृभाषा है बिना किसी को तंग किए चलते हैं आगे आप सबके हिसाब से प्रोग्राम क्या होता है व्हाट इज अ प्रोग्राम कैन somebody आंसर आई एम वेटिंग फॉर द आंसर व्हाट इज अ प्रोग्राम you have in front of you the definition perfect perfect set of instructions yeah up as perfect Aman square yeah perfect program is a series of instructions for a computer to perform some action कोटलन में भी प्रोग्राम की डेफिनेशन तो बदलेगी नहीं बट कोटलन में एक चीज जो है हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं अगर मेरे चैट में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें सी सी प्लस प्लस से फैमिलियर है तो जैसे सी सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं प्रोग्राम वैसे सेम कोटलिन भी चलती है एंड फॉर योर नॉलेज अगर आपको सी सी प्लस प्लस आती है तो आपके लिए कोटलिन सीखना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इधर भी जैसे हम सी सी प्लस प्लस में करते हैं वैसे इसमें भी हम सब फंक्शन के अंदर डालते हैं कुछ भी हो वो फंक्शन के अंदर ही जाएगा
और उसे मेन फंक्शन से हम रन करेंगे। बस दैट्स इट। जस्ट उस कॉन्सेप्ट C++ के इधर ही लगाने हैं और हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे प्रोग्राम का हो गया, लेट्स मूव ऑन टू कोड। अब कोड क्या होता है? प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर या उसको देते हैं, कंप्यूटर या मशीन को, कि भैया ये हमें टास्क परफॉर्म करके दो। वैसे कोड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं हम देते हैं उसे कोड बोलते हैं। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए, द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन for what the computer should do is called a code. When you modify the code in a program, the output can change. अगर जैसे हम कोड में चेंजेस करते हैं, या तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, या एक डेवलपर के लिए जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जिसको हम एरर बोलते हैं, वो टपक जाएगा। तो वो डिपेंड करता है हम कोड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर सम गुड प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस आल्सो which I can cover but I may not, क्योंकि उससे क्या लंबा हो जाएगा बहुत टाइम, और आप लोगों को और टेक्नोलॉजीज भी सीखनी है इसके बाद, तो आप लोगों का भी वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और हम भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इतना बेसिक तो सिखा ही सकता हूँ आपको कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे सोल्यूशन चैलेंज में, और कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ, बाकी कंपटीशन भी हो सकता है बट ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, कर लोगे ना कुछ। मूविंग फर्दर, मेन फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे वही चीज, कोटलन के अंदर जो भी चीज एग्जीक्यूट होगी वो मेन फंक्शन के अंदर ही होती है। इफ समवन इज मेकिंग नोट्स, प्लीज रिमेम्बर मेन फंक्शन को मेनली लिखना, क्योंकि कोटलिन में अगर आप मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखोगे तो वो एक टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए भी, और जो कंपाइलर है उसको कोड रीड करने में भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस। अब मेन फंक्शन आपको बता दिया मैंने, कोड क्या होता है वो बता दिया, प्रोग्राम क्या होता है वो बता दिया, अब फंक्शन क्या होता है ये आप बताओ। मैं इधर से हटा देता हूँ ताकि कोई कॉपी ना करे, बट बता दो, लिख दो इधर चैट पे। Everyone on the chat, please. What is a function? Hmm. Waiting. क्या चैट को मेरी आवाज आ रही है? 1 2 3। 1 2 3। Oh, perfect. What is a function? Sequence of program instructions. Okay. Anything which reduces a human effect. Perfect. So let me tell you the exact definition. Yes, you all are correct, but still, a function is a segment of a program that performs a specific task. You can have many functions in your program or only a single one. Like अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एक फंक्शन क्या करेगा? अगर GDSC का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? GDSC में हमारे पास एंड्रॉइड लीड है, हमारे पास AIML लीड है, हमारे पास वेब डेवलपर है, हमारे पास फ्लटर लीड है। ठीक है, हम सबको एक इमेजिन करो, हम एक फंक्शन है, ठीक है, और हम सबको स्पेसिफिक टास्क है। मेरे को टास्क है मैं एंड्रॉइड सिखाऊंगा, फ्लटर वालों को टास्क है वो आपको फ्लटर सिखाएंगे, AIML को टास्क है वो आपको AIML सिखाएगा, ठीक है, वेब डेवलपर को टास्क है कि वो वेब डेवलपमेंट सिखाएगा। पर ये सिखाने का इंस्ट्रक्शन मेन फंक्शन के अंदर होगा जो लीड है। GDSC का लीड हमारा हो गया मेन फंक्शन, और ये चार हो गए हमारे
फंक्शंस जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। तो अब भी कोड की सीक्वेंस थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि कैसा रहता है। लीड के अंडर की हायरार्की जो रहती है वो परफॉर्म करती है टास्क, और लीड जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है वो चीज परफॉर्म करने का। वैसे ही कंपाइलर को सिर्फ अभी लीड के ऊपर जो बड़े बड़े लोग बैठते होंगे, जैसे गूगल GDS GDG नागपुर या समथिंग, GDG को सिर्फ लीड आंसरेबल है और लीड को हम। तो वैसे ही कंपाइलर को जो है सिर्फ मेन फंक्शन दिखता है, उसे हम नहीं दिखेंगे, और मेन फंक्शन को हम दिखेंगे, वो हमें एग्जीक्यूट करेगा, और कंपाइलर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे प्रोग्राम रन होता है। तो creating specific separate functions for specific task has a number of benefits. कोई भी फंक्शन हम अगर क्रिएट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम देखें तो जैसे अगर हम बार बार हमें कोई कोड मंगाना है, लाइक अगर एंड्रॉइड वर्कशॉप में 10 बार लेना चाहूँ, तो GDSC के पास मैं हूँ, या GDSC फ्लटर की वर्कशॉप 10 बार लेना चाहेगी, तो उनके पास फ्लटर का लीड बैठा है, और वो उसे बोल सकती है कि भैया तुम वर्कशॉप ले लो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर यही चीज मेरे को 10 अलग अलग लोगों के पास करके आनी पड़ती, लाइक अगर हमारे पास एंड्रॉइड लीड ना होता, या हमारे पास फ्लटर लीड ना होता, तो GDS से बार बार क्या करती, नए नए बंदों को पकड़ के आती, एफर्ट बढ़ता। वैसे ही प्रोग्राम में अगर हम कोई स्पेसिफिक टास्क को अगर हम एक फंक्शन में डिफाइन कर दें, तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं ना। लाइक अगर मैं A+B का एक फंक्शन ही बना दूं, और 2 डिजिट्स में A+B के लिए वो फंक्शन लगा दूं कि ये भैया ये तुम्हारे पैरामीटर्स हैं, मैं पैरामीटर्स पे भी आऊंगा, ये तुम्हारे पैरामीटर्स हैं, इन्हें ऐड करना है, ये लो तुम्हारा फंक्शन नहीं। वो फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा और वो द पैरामीटर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। कभी भी अगर आप कोडिंग सीखते हो, नॉट ओनली कोटलिन या एंड्रॉइड, कोई भी फर्दर, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट देम विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ के एग्जांपल से जैसे ही आप कोडिंग को कनेक्ट करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कोडिंग ऐसा एक रास्ते पर चलने वाली चीज लगेगी जिसमें इतने डिफिकल्ट नहीं आते। हाँ, रास्ते पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, वैसे कोडिंग में भी आते हैं बग्स, बग्स आते हैं, कभी कभी एरर्स आएंगे, कभी कभी वार्निंग्स को तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत स्टेबल कोड चलता है। हम जैसे इधर वार्निंग्स को इग्नोर कर लेते हैं कंपाइलर्स में, वैसे वहाँ नहीं चलता, क्योंकि वार्निंग्स कभी कभी आगे जाके एरर बन सकती है एज पर द अपडेट्स या वर्जन में कोई चेंजेस आए, तो उससे वो ना एक बहुत टेंशन वाली चीज हो सकती है। तो असी गोष्टी आती है। मूविंग फर्दर, readability of the code also increases when you use functions। कि जैसे अगर कोड में 200 लाइन का है, ठीक है, और अगर मैं एक फंक्शन में डाल देता हूँ वो, और फंक्शन का नाम लिख दिया है जैसे एडिशन, तो जो भी नया बंदा आएगा ना उसे मालूम रहेगा कि एडिशन के फंक्शन के अंदर एडिशन का कोड है, सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन का कोड है। और जैसे अगर समझो आप हो, ठीक है, आप आते हो एसोनी में और आप बोलते हो GDSC का चैप्टर का है, और यार GDSC की टीम को बुलाते हो। GDSC की टीम आपको एक बार इंट्रोड्यूस करेगी, ये हमारा फ्लटर डेवलपर है, ये हमारा एंड्रॉइड डेवलपर है, ये हमारा वेब डेवलपर है। लीड ने आपको ये सब बता दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे डेवलपर्स हैं। और अगर मेरे को एंड्रॉइड से डाउट है तो मैं एंड्रॉइड के पास आऊंगा, मेरे को फ्लटर से डाउट है मैं फ्लटर के पास जाऊंगा, मेरे को वेब डेवलपमेंट में डाउट है मैं वेब डेवलपमेंट के पास जाऊंगा। सिंपल एज दैट। वही चीजें चलती है कोडिंग में भी। फंक्शंस आपका रीडेबिलिटी, जैसे अगर बग आया 2 नंबर्स को ऐड करने में, जो नया डेवलपर आएगा वो क्या करेगा, उस फंक्शन पे जाएगा, देखेगा कि एडिशन फंक्शन का एरर है, एडिशन फंक्शन में जाएगा, लाइंस गो थ्रू करेगा, उसे उसे एरर मिलने के चांसेस जल्दी है, या उसे पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक हुई है डेवलपर से। या अगर नॉन कोड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होगा ना,
तो एक बार उसे कोड देखने पे इतना तो समझ आ जाएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के कोड कहाँ है। और हो सकता है कि कभी कभी चांसेस है कि पैटर्न कोडिंग भी रहती है। पैटर्न कोडिंग क्या है कि जैसे सी प्लस प्लस में हमें मालूम है कि एंड में सिंटेक्स लगना ही चाहिए, या सम कोडिंग में मालूम रहता है। तो उसे पैटर्न कोडिंग मिलता है कि हमें पैटर्न देख के भी समझ आ जाता है कि शिट, यहाँ इसने ये चीज नहीं की है, तो इसके कारण एरर हो सकता है, वो डेवलपर को बता सकता है। अब तक तो मेरे को लगता है सबको समझा होगा। मैं फिर भी चाहूंगा मेरे को चैट में कंफर्मेशन हो सबको समझा क्या। हेलो। यस। परफेक्ट। अच्छा एग्जांपल दिया ना मैंने। मेरे को तारीफ सुनने में मजा आती है यार, थोड़ा हाँ ना ऐसा बोलो यार, मेरे को चैट अच्छी लगती है भाई। हाँ, चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। डिफाइनिंग अ फंक्शन। अब देखो, कोटलिन ना बहुत मजेदार लैंग्वेज है, और इसके अंदर ना चीजें भी बहुत मजेदार है। तो इसलिए ना हम क्या बोलते हैं, फंक्शन को बुलाने के लिए हम बोलते हैं फन। फन, नथिंग बट फन। फन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, दिस इज अ फंक्शन। डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, देखो अभी मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन का दिया एग्जाम्पल, और ये देखो डिस्प्ले इंट्रोडक्शन एक फंक्शन ही है, ठीक है। और ये मैंने समझो लीड को दे दिया है ये फंक्शन। यू हैव टू डिस्प्ले द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑल स्टैंडिंग हियर। वो एक एक का नाम लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, खत्म। फंक्शन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, इट्स लाइक फन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कभी भी आप अगर अपना कोई भी जैसे अगर एप्लीकेशन में जा रहे हो, एप्लीकेशन में एडिशन का है कुछ, तो आपको चालू करना है फन एडिशन फंक्शन, या एडिशन सिर्फ नाम लोगे वो भी चलेगा। फन एड अंदर दो ब्रैकेट्स और आगे मूव ऑन। मैं आपको बताता हूँ आगे भी, ठीक है। अब जैसे मैं बोला डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, अब ये क्या है, फंक्शन नीड टू हैव अ डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव नेम सो दैट दे कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी फंक्शन है आपका, उसके पास ना एक नाम होना चाहिए, एक अच्छा नाम होना चाहिए। जैसे एडिशन है तो एडिशन एक नाम होगा। अब लीड को हमें इंट्रोड्यूस करना है तो उसके पास एक फंक्शन है भाई, इंट्रोड्यूस। तो डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, या इंट्रोड्यूस रख दूंगा, फन इंट्रोड्यूस, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब ये दो ब्रैकेट क्या है अगर आप पूछोगे, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये क्या है, आप बताओ मेरे को। और ये डेफिनेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से बता सकते हो आपको क्या लगता है ये। कि बेसिकली मेरे को तो पहले ऐसा लगता था ये लगाना जरूरी ही ये नहीं लगाया तो कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं, इसको भी नाम देता है, इसका भी कुछ अगर वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो तो ये एसिंक को आगे फंक्शंस या पैरामीटर्स देने में काम आता है। तो वैसा ही है कि functions need a set of parentheses। parentheses क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर मैं पैरामीटर्स कॉल करूंगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी मैं फर्दर बताता हूँ। पैरामीटर्स अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जानना है, तो पैरामीटर्स वो होंगे जो मैं पास करूंगा एक पर्सन को या एक फंक्शन को। जैसे अगर मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ किसी चीज को, तो मैं जैसे इंट ए और इंट बी डिफाइन कर चुका हूँ, और उस फंक्शन को मैं कॉल करूँ एडिशन के, तो उसके अंदर इंट ए और इंट बी जो है ना, वो मेरे पैरामीटर्स है। और वो ब्रैकेट के अंदर मैं सी सी प्लस प्लस में तो स्पेशली वो प्रोवाइड करना पड़ता है जब हम कंस्ट्रक्टर वगैरह को कॉल करते हैं या एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर हम इंट ए की वैल्यू और इंट बी की वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली कोटलिन में इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं ऑप्शनली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, पर ये वहाँ रखना जरूरी है, वरना इसके बिना आपको
स्पीड ब्रेकर आएगा आपके चलने में, जो हमारे एरर्स हैं या हमारे बग्स हैं। एरर्स आते हैं मोस्टली, मैं बग्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या, इंसान को ना चालू करने में डर ना लगे। एरर्स आर ऑल्सो बग्स विच कैन बी सॉल्व, सिंपल। अभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिलहाल अभी पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एम्प्टी फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, इसके बाद अपन देखते हैं कि आगे क्या करना है। मूविंग फर्दर, डिफाइन द कर्ली ब्रेसेस क्या है। कर्ली ब्रेसेस हम इसलिए लिखते हैं, फंक्शन नीड्स कर्ली ब्रेसेस दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी एग्जीक्यूट अ टास्क। कोई भी टास्क अगर मैं चाहूँ एग्जीक्यूट करना, तो मैं वो कर्ली बेसिस के अंदर डालूंगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, चलो, नाउ देयर इज अ टास्क पुटिंग इट टुगेदर। हमें आउटपुट ये चाहिए, ठीक है, और दिस इज व्हाट वी नीड टू बी हैव एज अ आउटपुट। तो मैं चाहूंगा कि मेरे को चैट बताए कि इधर क्या आना चाहिए। ओके, वी हैव अ न्यू गेस्ट, प्रथमेश कर्माकर, हेलो। सो अगर चैट को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं ही टाइप कर लेता हूँ यहाँ। सो बेसिकली हमें ये आउटपुट चाहिए था, और जैसे मैंने चैट में प्रोवाइड किया, दैट्स द आंसर। अब अगर किसी को जानना है प्रिंट एलन क्यों, तो इट्स बेसिकली फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर प्रिंट लाइन इन कोटलिन। और दूसरे लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह में भी। सी प्लस प्लस में हम सी आउट देते हैं, पाइथन में हम प्रिंट देते हैं, सी में अपन प्रिंट लाइन ही देते थे आई गेस। अब मेरे को याद नहीं है उतना, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस पे शिफ्ट हुआ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। तो ऐसा है, इसके अंदर हमें प्रिंट एलियन यूज करना पड़ता है। मैं आपको फर्दर बताऊंगा सम बेसिक फंक्शंस वगैरह। पर अब तक की कोटलिन सबको समझी होगी। मेन मेन पता है कि यही इतना ही जो है वो मेन है। आगे जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट इतने में आप कोडिंग चालू तो कर ही पाओगे। मूविंग फर्दर, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली जो चीज, जो डेटा हम स्टोर करना चाहेंगे इनसाइड द कोड, जो भी डेटा को अगर हम कोई कोड के अंदर डालना चाहते हैं तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे अगर मेरा नाम है, तो लोकेशन, कैन यू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टेशन। वेरिएबल्स जो हैं वो हमारा डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और वो अपने, जैसे अगर एज करके एक वेरिएबल है, या नेम नेम करके एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके अंदर एक वैल्यू डालूंगा, जैसे नेम मेरा वेरिएबल है, उसका वैल्यू है लोकेशन। दैट्स, अगर वही चीज अगर मेरे को कोड में लिखनी है तो मैं उसे वेरिएबल में लिखता हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो चीजें हैं। एक नेम करके एक डेटा है,
एक एज करके एक डेटा होगा, ठीक है। तो माय नेम इज लोकेश एंड आई एम 20 years ओल्ड। जैसे कि मैंने इसके पहले पॉइंट लाइन आपको बताया, वैसे ही होगा इसमें भी कि माय नेम इज लोकेश एंड आई एम 20 years ओल्ड। तो नेम के पास जाएगा लोकेश एज अ डेटा और एज के पास आएगा 20 एज अ डेटा। मूविंग फर्दर कि अब तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ओके, चैट चैट मेरे को बोले कि स्टार्टिंग से समझाऊं। तो अभी तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और इसके बाद एंडिंग एंडिंग में एक बार पूरा रिविजन ले लूंगा, तब आप सबको समझ आ ही जाएगा। और वो एकदम जल्दी जल्दी नहीं लूंगा रिविजन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। एम आई ऑडिबल इन लाइव? हेलो, am I audible in live? Anyone? Yes, you are. Yeah. Okay, sure. Thank you. तो जैसे मूविंग फर्दर, अब तक वेरिएबल वाली चीज तो समझ आई गई होगी। मूविंग फर्दर, अब जैसे जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया वैसे भी यहाँ पे भी है कि जैसे इधर मेगन और 28 years ओल्ड का है, वैसे मैंने लोकेश और 20 का दिया, या जेनेट या 49 years ओल्ड का एग्जांपल है वैसे ही चल। मूविंग फर्दर, डेटा टाइप्स इन कोटलिन। अब इधर मैं चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा अटेंशन दें, क्योंकि some data types are necessary to move further in coding and its culture. So आई होप सबको ये दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पीपीटी शेयर कर लूंगा या रिसोर्सेस में आपको ये सब आ जाएगा। There are data types like string, int, double, float and boolean। ठीक, ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है, बट कोटलिन में भी है ये चीजें। तो पढ़नी तो पड़ेगी, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये सब ऑलरेडी आता होगा, पर फिर भी आप बनाने में भी ये सब उतने ही काम के हैं जितने कोटलिन में काम करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या रहता है? स्ट्रिंग टेक्स्ट की चीजें स्टोर करता है। जो भी चीज टेक्स्ट या एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी उसको स्ट्रिंग फंक्शन या स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है। जैसे ऐड, कांटेक्ट या सर्च। अगर जैसे आप अगर कोई बटन भी बनाओगे अपने ऐप में, तो बटन के बीच का प्लेस होल्डर जो होगा वो आपके स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब इंट रहता है, इंट क्या रहता है? जो भी इंटीजर नंबर्स होते हैं प्रोग्राम में वो डिफाइन करता है इंट। जैसे 32, 49, 56, 69, ऐसे टाइप के नंबर्स को इंट में हम डालते हैं। और कोई भी फंक्शन अगर अपन अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो इंट केस में परफॉर्म होता है, ठीक है। वो फंक्शन के अंदर भी अपन इंट ही देंगे वो चीज। अगर अपन वहाँ स्ट्रिंग देंगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा कंपाइलर के लिए अंडरस्टैंड करने का, और वो बोलेगा तुम्हारे कोड में error है, ठीक है, या तुम्हारा कोड गलत है। हालांकि वो गलत ही है बट फिर भी। डबल, डबल क्या होता है? डबल डेसिबल नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है। इंट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो डेसिमल के बाद की वैल्यू स्टोर कर पाए, क्योंकि वो डिजाइन ही नहीं किया गया है कंपाइलर्स वगैरह में कि वो इंट के बाद का इंट बता सके कि डेसिमल या पॉइंट के बाद कोई नंबर है, ठीक है। इसलिए हम डबल यूज करते हैं। डबल क्या करता है? डेसिमल के बाद की चीजें, जैसे 2.0 या 2.0, 2.69, 2.78, ये जितने भी हैं अपन वो डबल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल नंबर, वो भी डेसिमल नंबर के लिए यूज होता है बट लेस प्रिसाइज देन डबल, ठीक है। कुछ चीजें
जो डेसिमल डेसिमल बहुत प्रेसाइसली नंबर स्टोर करता है, ठीक है। बट डबल क्या कर सकता है, ये फ्लोट क्या कर सकता है, फ्लोट डेसिमल नंबर के बाद जैसे 5, इधर आपको एग्जांपल अगर दिख रहा होगा अच्छे से, वो है 5.0 f या 1630.209 f। ऐसी चीजें फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर किसी प्रोग्रामर ने फ़ारेनहाइट की जगह डायरेक्ट एफ यूज कर दिया, तो हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, फ्लोट या कोई और फंक्शन। ये कोटलैंड के पास एडवांटेज है, वरना बाकी लैंग्वेजेस में फ्लोट अगर ऐसे यूज करें हम, तो वो एरर दे देगा, एरर दे देगा या बग दे देगा, ठीक है। अब बुलियन, बुलियन क्या होता है, बेसिकली दो सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग में। या तो सही है या तो गलत है। कोई भी चीज अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपके पास दो दो रोड्स है सामने, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक ही चॉइस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर राइट है तो 1 ले लो, और लेफ्ट है तो 0 ले लो। या तो 1 आएगा आपका आंसर, या तो 0 आएगा अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो। आप दोनों रोड से जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे हो सकता है जा सकते हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। बट अगर वो दो बहुत डिस्टिंक्ट रोड है, तो या तो आंसर आपका 1 आएगा या तो 0 आएगा। उस हिसाब से बुलियन भी काम करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आपका आंसर 1 है उधर, यानी राइट रोड पे जाके आपको सही जगह मिलेगी, तो आपका आंसर ट्रू है और वहां से जाओगे। बट अगर आप 0 पे चले जाते हो, आपके डेस्टिनेशन 1 पे है, वो आपका गलत है और फॉल्स है। उस हिसाब से बुलियन के पास भी सिर्फ दो वैल्यू होती है, एक ट्रू एक फॉल्स, या 0 या 1। मूविंग टू नेक्स्ट, डिफाइनिंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल हमने डिफाइन बता दिया कि वेरिएबल होता क्या है। अब हमारी बारी है वेरिएबल को डिफाइन करने की। तो दो चीजों में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक वैल कीवर्ड यूज करके, एक वेर कीवर्ड यूज करके। वैल हम कब यूज करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड इफ समवन इज मेकिंग नोट्स ऑफ इट। वैल हम तब यूज करते हैं जब हमें मालूम है कि इस चीज की वैल्यू फर्दर चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरा नाम चेंज नहीं होगा, बट मेरी एज चेंज हो सकती है ना। तो वेल नेम कैन बी चेंज, बट अगर वेल एज लिखूंगा और मैं 21 ईयर्स का हो गया, तो उसी दिन मेरा प्रोग्राम मेरे को दे देगा बग कि भैया तुम्हारा तो एज चेंज हो चुका है, और अब वो वहाँ वेल कीवर्ड में स्टोर्ड है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। या तो आप अपना एज पीछे ले लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या कीवर्ड को चेंज कर लो ना, सिंपल वेर यूज करो, वेर यानी वेरिएबल, वेरिएबल जो चेंज होगा, और वेल यानी जो चेंज नहीं होगा। एल और आर का फर्क है, बट ये बहुत डिफरेंस करता है। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि हमारे 200-300 लाइन का कोड होता है एंड्रॉइड वगैरह में, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभी हम मिस आउट कर लेते हैं, तो बेटर है ये चीजें हमें याद है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, ये प्रोग्राम में देख सकते हो आप, वेल नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम इधर क्यों यूज किए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरा नाम समझो मेघन लिखा है यहाँ, वैसे लोकेश है, बट लोकेश, ठीक है। और वह एज इंट इज इक्वल्स टू 28, 28 वैसे मेरा रोल नंबर है, बट उसे हटाओ। इंट एज अगर मेरी 21 है या 20 है, मैं वो लिखूंगा, क्योंकि वो चेंज होगी। वो जैसे जैसे मेरी बर्थ डेट्स आएगी, वैसे वैसे वो चेंज होगी। बट मेरा नाम चेंज नहीं होगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। वही चीजें हैं वो भी। जैसे कि आपको बताया, ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव अ नेम एंड दैट नेम शुड बी रीडेबल फॉर द थर्ड पर्सन। ये सम गुड प्रैक्टिस है कि आलतू फालतू नाम मत दो आप अपने वेरिएबल्स को, क्योंकि कभी कभी होता है कि अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में A B C D ये सब लिख लेते हैं, ठीक है। और वो मुश्किल हो जाता है रीड करना हमारे लिए बाद में, कि ए क्या करता था भाई, बी क्या करता था, सी क्या करता था। इससे अच्छा डायरेक्ट नाम दे दो ना। नेम है तो नेम दे दो, एज है तो एज दे दो, एडिशन हो रहा है एडिशन दे दो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है सब्ट्रैक्शन दे दो, नाम देना।
कोई भी वेरिएबल वगैरह को नाम देना। अगर टेस्ट वेरिएबल बनाया तो उसे टेस्ट वन दे दो ना, टेस्ट वन दे दो, या टेस्ट एडिशन दे दो, टेस्ट सब्ट्रैक्शन दे दो, ठीक है। एंड नाउ मूविंग फर्दर, ये डेटा टाइप हम क्यों मेंशन करते हैं? अब कोटलिन में क्या होता है, वैसे अपन बाकी लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग या इंट एज इक्वल्स टू लोकेश लिखते हैं। कोटलिन में थोड़ा उल्टा हिसाब चलता है। अपन पहले ये लिखते हैं कि वो सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे वो सही जा रहा है कि नहीं अगर हम लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अपने कोटलिन के अंदर हम पहले वो बताते हैं कि वो चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। अगर हमें मालूम है हमारा वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा तो हम उसे वेल में डाल देते हैं, ठीक है। मेरा नाम जैसे है वो वेल में जाएगा, ठीक है। वेल फंक्शन का नाम, ठीक है, या वेरिएबल का नाम, स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप इक्वल्स टू वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है। और अगर हमें मालूम है हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी फर्दर प्रोग्राम में या फर्दर अपकमिंग सिचुएशंस में, तो हम उसे where में स्टोर करेंगे। where एज उसका डेटा टाइप इक्वल्स टू उसका उसका क्या वैल्यू है, 28 है उसका वैल्यू, तो 28, 20 है तो 20, 20 अगर 21 भी हो गया, अगर हम where में स्टोर किए हैं तो वो एरर नहीं देगा। मूविंग फर्दर, ये अपनी वैल्यूज रहती है, कोई भी इसको वैल्यू देना जरूरी रहता है, पर जो भी है ऐसे हम स्टोर करते हैं। मूविंग फर्दर, अभी हम अब तक हमने जो जो पढ़ा, ठीक है, वो सबको एक साथ अपन ने यहाँ लाए हैं, ठीक है। फंक्शन अपना है डिस्प्ले इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू है नेम, जो मेरा नाम है, ठीक है। वैल्यू है एज, जो उसकी एज है, और अपन एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, आई आई एम, फिर वो नेम को हमने कॉल किया, नेम फंक्शन को, डॉलर नेम, ठीक है, एंड आई एम डॉलर एज ईयर्स ओल्ड। ऐसे हम इधर फंक्शन कॉल करते हैं, बाकी सब बाकी लैंग्वेजेस में अपन कॉमा देके इंक्लूड करते थे, ठीक है। वैसे इधर हम इसको ऐसे कॉल करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। या जैसे अगर आप सी सी प्लस प्लस में देखे होंगे तो अपन कोई वेरिएबल वगैरह को कैसे कॉल करते हैं, %d, %s, ये टाइप में। इधर अपन डॉलर देके बुलाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि फंक्शन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन है अपना, और मेन फंक्शन के अंदर बैक टू आवर फर्स्ट एग्जांपल, मैंने समझो अपने इसको लीड को दे दिया मेन फंक्शन का, ठीक है। वो हमारा लीड हो गया मेन फंक्शन, उसको मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले इंट्रोडक्शन। डिस्प्ले इंट्रोडक्शन में हर एक की वैल्यू डिफाइंड है, वैल्यू एंड्रॉइड लोकेश, ठीक है, वैल्यू एज 21, उसके क्वालिफिकेशंस वगैरह स्ट्रिंग वगैरह में मैंने स्टोर कर दिया, और लाइन को एक प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये कोड परफॉर्म करने की जरूरत तो मेरे को नहीं लग रही, बट फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप कोटलिन प्लेग्राउंड पर जाओ और ये कोड एक बार टाइप करके आप देख सकते हो। एज अ रिसोर्स ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा GDSC गूगल सोल्यूशन के इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आई होप एवरीवन हैज जॉइंड दैट ग्रुप, बट फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है, I will request the team to drop the link in comment section or in the video description itself. So moving further, आज के लिए इतना ही, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों का टास्क है कि आप जाइए एंड्रॉइड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे और जाके वो लिंक पे जाओ, ठीक है। ये एक लिंक है, इस लिंक पे जाओ और यूनिट 1 पाथवे 1 वो आपको कंप्लीट करके रखना है कल तक। कल हमारा नेक्स्ट सेशन है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में नई चीजें बताऊंगा, नया कुछ होगा, एंड्रॉइड जर्नी का सेकेंड पार्ट होगा, तो उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, हो सकता है आप लोग भी हो। और अगर आप लोगों की श्रद्धा इच्छा हो तो अपने दोस्तों वगैरह को भी ला लो, क्योंकि मेरे दोस्त तो ऑलरेडी आ चुके हैं चैट वगैरह में, और मेरी टीम तो है ही, वो सब बहुत सीरियसली अटेंड करी जाए। अगर आपके दोस्तों को भी इंटरेस्ट हो एंड्रॉइड वगैरह में या टेक
बूस्ट करने में किसी वो तो सबको इंटरेस्ट होता है, बट फिर अगर उन्हें लगता है कि एंड्रॉयड उनके रिज्यूमे को बूस्ट कर सकता है, तो उन्हें भी कल लाओ अपने सेशन में, कुछ ना कुछ कर लेंगे, रिवीजन करके उन्हें भी समझा देंगे। और इस लिंक पे अगर अगर आप सब कंफर्टेबल है तो जाइए, और जाके इस लिंक पे स्टार्ट हो जाइए अपनी गूगल डेवलपर बना के। मैं ये लिंक प्रोवाइड कर लेता हूँ। This is the link to the pathway. You may proceed that, and you have to complete Unit 1, your first Android app of Pathway 1. You have to complete this Pathway 1. Till then, I will see you tomorrow. And this is Lokesh Waziani, your host cum dost, signing off today. See you tomorrow, and all the best for completing Pathway 1. Good night and have a good day. Further to you, Aman. Thank you so much, Lokesh. Thanks a lot for that wonderful, crisp and short session on Android. Thank you so much, Lokesh. And I'm very excited for day two, where we'll be having more over the next command. What you are planning to conduct in day two, Lokesh? Yeah, the day tool journey will mostly for starting with Android Studio and setting it up. Like it requires a lot of time, so I will not waste mother time, and start with setting it up and also giving some tips how to use Android Studio in low-end PCs, and how to learn Kotlin without using ample of resources from your computer itself. Like I also have a thin and light laptop, so I think most of the generation students will have that only. So it's better that we help them in that way, that they can ace in solution challenge without thinking that why we don't have this resource or something like that. So basically, I will give them some tips about it and set up the Android Studio, what is emulator, and the journey will be about all about Android Studio and the environment, the build environment, and some good and bad practices in Android. All right, all right. So, do we need to have any prerequisite for tomorrow, Lokesh? Yeah, basically you should have a good internet connection because Android requires a time. If it is slow internet connection, Android will need some time to set up in your PC. So better you should have a good internet connection, a fully charged mobile, because also and while connecting your Android mobile to your PC should have a ample of charging, because yeah, Android Studio just eats up a good charging of your PC, as well as if you are running an emulator on your mobile, it will eat that also. Like okay. And also a USB cable, good USB cable that is supported by your computer, that supports Android debugging and Android threading, like something like that. All right, Lokesh. So we are very pretty excited towards the and thanks a lot for joining in, guys. अगर आप लोग भी गूगल सॉल्यूशन चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं, सो जस्ट आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में लिंक डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल की, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक यू सो मच लोकेश फॉर ज्वाइनिंग इन. See you all guys tomorrow. Till then, take care and bye bye. Thank you so much, Lokesh. Good night. Good night.